हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज तृप्ता डोगरा फ्रॉम डोगरा क्लासेस। सो फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ नाउन जो है, हम बहुत दिनों से ये टॉपिक को मैं बहुत ही स्मॉल सेगमेंट्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। और स्पेसिफिकली मैं बता दूं कि ये जो क्लास है हमारी, ये सिर्फ प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए है। बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मैंने इसमें दी है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी जैसे ये वर्ड हमारे माइंड में आता है तो हम क्या इमेजिन करते हैं? हम ये इमेजिन करते हैं कि लाइक लव, ऑनेस्टी, फियर, हंगर, एज एंड देर आर मेनी वर्ड्स जो कि हम फील कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं, और उसको हम टच नहीं कर सकते। बेसिकली आप ये नहीं कह सकते, उस चीज़ को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसकी क्वांटिटी आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है। अब ऑनेस्टी है, लव है, या इस टाइप के और भी जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो एक जो भी वर्ड्स फीलिंग्स की कैटेगरी में आते हैं, वो वर्ड्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और जो छोटे बच्चे हैं, हम उनको ये जो वर्ड्स हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, honesty, love, hate, loyalty, kindness, age, birth. There are many words. So let's start our new topic, abstract nouns. Now I will explain you all the parts of abstract nouns, और अभी हम उसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो आप मेरे चैनल को कंसीडर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट our new topic, abstract nouns. Hello everyone, welcome to Dogra classes. Today we will learn an interesting topic called abstract nouns. So let's begin. What are abstract nouns? Abstract nouns are names of feelings, ideas, qualities, or states that we cannot see, touch, hear, smell, or taste. We can only feel or think about them. We cannot touch love. We cannot touch honesty. We cannot touch happiness. But we know they exist. So, here are some examples like love, feeling of deep affection, knowledge, information and understanding, honesty, quality of being truthful, patience, ability to wait calmly, justice, fairness in action, courage, mental or moral strength, friendship, bond of care and trust, happiness, feeling of joy and contentment, peace, state of being calm and quiet, life, the state of being alive, success, achievement of a goal, education, process of learning and knowledge, wealth, possession of money and valuables, idea, a thought of suggestion, confidence, belief in your own abilities, kindness, quality of being caring and helpful. So, friends, these are the words which we use in our day to day life. We use such words, but we cannot see, touch, smell, or but they exist. So, these are the basically feelings which we feel. Abstract nouns are the nouns which exist in living beings' life. We experience it in our daily day to day life, and it is an important part of our life. Without abstract nouns or feelings, life is nothing. So, if you like my videos, you can consider to my channel. There will be more videos like this, and we are going to learn together. So, thank you so much for your precious time.
If you like my videos, you can consider to my channel, you can follow my page. I hope I'm clear. Thank you so much.